Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Sparsh Saxena. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार। घड़ी का इशारा हो चुका है शाम 6:30 का और हम आप सभी श्रोताओं का आपके फेवरेट शो मार्केट मंत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और साथ ही चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्पर्श। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। Thank you, Sparsh. Yes, let's begin with the headlines as always. Prime Minister Narendra Modi reiterates importance of establishing global framework for digital technology, inaugurates ITU World Telecommunication Standardization Assembly and India Mobile Congress in New Delhi today. Domestic benchmark indices end with losses. Sensex sheds over 150 points. Nifty settles above 25,000. And global crude oil prices fall sharply for the third straight session amid weak demand projections. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक ढांचा तैयार करने के महत्व को दोहराया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 150 अंक से अधिक गिरा और निफ्टी 25,000 के स्तर के पार। और कमजोर मांगों के अनुमान के चलते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगातार 3 सत्रों से गिरावट जारी। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं के केंद्र में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचा की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान इस विषय को उठाया था और वैश्विक संस्थानों से वैश्विक शासन में इसके महत्व को पहचानने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि WTSA का उद्देश्य वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस की सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है। आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जहां 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक का रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, भारत जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत 5G का दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा बाजार है और अब सरकार 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। हमने अपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड को अंडर सी केबल्स के माध्यम से कनेक्ट किया। भारत ने सिर्फ 10 साल में जितना ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है उसकी लंबाई धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी से भी 8 गुना है। 2 साल पहले मोबाइल कांग्रेस में ही हमने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है।
So, Deepshika, as the Prime Minister reiterated the importance of establishing a global framework for digital technology, we know that we are making huge strides in digitization of India. We saw that the COVID certificate came to us in a digital format. We have Digi Yatra. We have now the payments at the lowest level also are being done through the digital mode from the mobile. Where do you see India going from here? Thank you, Lalima ji. We have seen, digital interface in India. If you have to go out, you just need your mobile phone. You don't need to carry cash. And if you have to submit your life certificate for senior citizens particularly, you can just do it with a click on your phones. So if you look at India's digital footprint, it is all encompassing, all aspects of life. Now we've made rapid strides. Mm-hmm. And this was, showcased during the G20 summit that India hosted. And we want to take it forward. We want to help other countries, and which is what we try to sort of push at the G20. And we are now trying to, and what Prime Minister today also spoke about, was to have a global framework. There are multiple aspects. You have to provide access. There are countries who do not have the kind of access that India has right now in terms of digitization. So provide them access. Help them get that access. Help them get that access. And also have some kind of a framework, where there is the privacy laws, the security of data of these countries are as protected. Like in India, we are trying to ensure that, data is protected. It is stored on our soils, not on foreign soils. So some kind of an agreement should be reached at the global level to ensure that everybody is on par, everybody is protected, all countries are protected. दीपशिका जी, प्रधानमंत्री ने आज मेंशन किया ये बात में कि एक शिफ्ट आया है 2014 के बाद से 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, आज की डेट में 200 से ज्यादा हैं. तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा इंडियन इकोनॉमी पर और साथ ही साथ जॉब क्रिएशन में भी? स्पर्श और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि एक जमाना था जब 2 यूनिट्स थे और आज जो है पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ खड़ा हुआ है. आप आईफोन, एप्पल भी जो है उसका जो निर्माता है फॉक्सकॉन, उसने भी अपना प्लांट लगाया हुआ है और अब उसको बढ़ाने की बातचीत चल रही है वहां पर. और उसी तरह भारत अब सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाह रहा है. तो कोशिश जो कोविड के बाद और उससे भी पहले मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था. कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत पर फोकस आया. तो उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स आए हैं विभिन्न क्षेत्रों के लिए. तो जो फोकस है नीतिगत वो ये है कि देश में उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है उसको किस तरह से बल दिया जाए. तो बहुत सारे इंटरवेंशंस जो हैं पॉलिसी नीति के लेवल पर वो इसी हिसाब से किए जा रहे हैं कि देश में मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर की ग्रोथ हो ताकि जॉब क्रिएशन हो सके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है लार्ज स्केल जॉब क्रिएट करता है. और मोबाइल क्षेत्र पे एक बहुत ही इंटरवेंशंस जो किए गए बहुत सालों से, जब से मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था तब से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर खासतौर से काम किया गया और उसका असर जो है वो अब आपको दिखाई दे रहा है. और इसीलिए आज जो है हम यहां से निर्यात भी कर रहे हैं, न सिर्फ आयात हो रहा है बल्कि निर्यात भी हो रहा है. तो ये एक उम्मीद ये की जाती है कि इसी को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, सेमीकंडक्टर्स का वो उत्पादन भी यहाँ पे हो ताकि देश जो है आत्मनिर्भर बने इस क्षेत्र में और हम आयात पर जो निर्भरता है उसको कम करें, उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन भी हो. Each time, when it comes to technology, Deepshika, each time we've reached a certain level, we think, okay, that's it. And we realize that India is now getting very ambitious as far as technology is concerned, especially digitization is concerned. We thought 5G was, well, that's it, but we are now aiming for 6G. What difference would that make to a common man? Does it mean a lot? Or because we think 5G is the ultimate at the moment as things are?
Lalima ji, we've seen how technology is sort of really taken off in India. From 2G now we are at 5G, Right. and we've seen how earlier when even a small download took like ages, and now how it is so convenient. Now you have phone access, data access is available even in the remotest corner of the country or villages. Yes. So obviously, as capacity enhances, access will definitely improve. Its usage will improve, and as usage improves, what you're doing is essentially you're making your systems more robust, more accessible, and you are improving the consumer experience. And that is the whole. And also, usage in various aspects. So while 2G provided you limited, facility, 5G allows much more, access in terms of industries, various industries, the kind of work that they can do. So definitely it will be a step forward for the country. All right, great. Let's hope that it'll help improve our lives even further. Yes, Parish, next story, yeah. अब जान लेते हैं आज बाजार में क्या रहा। घरेलू बेंचमार्क सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 153 अंक यानी 0.19% के नुकसान के साथ 81,820 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 70 अंक यानी 0.2% से अधिक फिसलकर 25,057 पर रहा। बात करें बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप की तो दोनों ही सूचकांकों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। मिड कैप 0.2% ऊपर और स्मॉल कैप में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। All right, the stocks in detail now. The domestic benchmark indices today ended with losses. BSE Sensex shed 153 points or 0.19% to close at 81,820, and NSE Nifty ended with a fall of 70 points or 0.28% to settle at 25,057. The broader market at Bombay Stock Exchange outperformed the benchmark indices. Mid-cap index rose 0.2%, while the small-cap index ended over 1% up. In the Sensex index, 21 out of 30 companies ended in negative territory. In the laggards, Bajaj Finance lost 2.7%, Reliance shed more than 2%, and Tata Steel fell 1.6%. Conversely, in the top gainers, ICICI Bank climbed 1.9%, Bharti Airtel gained 1.2%, and Asian Paints added 1%. In sectoral indices of the BSE, 13 out of 20 sectors logged gains. In the top gainers, Realty rose more than 2%, Services gained 0.8%, and Industrials added 0.6%. In the top laggards, metal declined more than 1.5%, energy slipped 0.3%, and commodities was 0.2% down. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,068 companies advanced and 1,894 declined, while 102 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 106 companies hit their 52-week high, while 25 hit their 52-week low. Deepshika, taking a dig at what the word Sparsh used, nuksan, kya वाकई nuksan hai? Shedding BSE Sensex shedding 153 points, but closing at 81,820. Yet at the end we say that the overall market breadth at the BSE was positive. How do you explain that? Lalima, if you see, if you see the markets, there's been about a 5% correction since the peak. I mean, as in a decline, about that much. But now, if you see, I think there is a bit of realization that the conflict, the geopolitical conflict, which has sort of escalated, may not sort of escalate any further. There seems to be that there is a fatigue about the conflict. Right. So, I think that is where the market is. And pre-festival, I think you see some bit of wobbliness, but you've sort of moved away from the
large volatility which you had seen, the large declines that you were seeing. So it seems like there is a fatigue about the conflicts there, and also I think there is a bit of positiveness. So I think it's trying to find its balance, equilibrium, I would say. Henceforth, if you ask me, I think maybe it is time to sort of do some cherry picking, look at something which sort of interests you, and move forward, because overall, in terms of the macros, the economy looks to be on the firm footing. And if you look at all the other indicators, high frequency indicators, assumption is that post Diwali, the festive season, and also after monsoons, there's going to be pickup in demand, so on. जी, जैसा अभी लालिमा ने बताया कि मार्केट में आज गिरावट देखने को मिली दोनों ही बेंचमार्क सूचकांकों में हमारे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि खासतौर पे अगर हम देखें ब्रोकिंग सेक्टर से जुड़े आज स्टॉक्स, उनमें काफी अच्छी तेजी देखी गई, उसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ एक क्षेत्र जो हैं वहां पर जो एक सेंसिटिविटी रहती है, कुछ आज जो है कुछ कंपनीज के रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेशन था एनालिस्ट का वो नहीं मीट हुआ, उसके कारण भी थोड़ा सा असर है. तो ओवरऑल जो है कुछ क्षेत्रों में इंटरेस्ट आ रहा है, बाजार का निवेशक उठा रहे हैं, फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो आई थिंक थोड़ी सी उम्मीद बन रही है कि मार्केट्स जो है बेहतर परफॉर्म करेंगे, और उसका मिला जुला असर ये इन कुछ जो चुनिंदा क्षेत्र हैं उनमें दिखाई दे रहा है. The Prime Minister mentioned that 94 crore internet users we have in our country, and we have a huge population, the most populated country in the world. Does that give us an edge, because we are a producer and we are a consumer as well, and then add to that we are a country full of festivals. Every now and then we have festivals. Of course, now the season starts in a robust way. Does that give us an edge somewhere? Both the factors, festivities on one hand and a huge population as a consumer on the other. We do have a large market, Lalima, definitely. But, we also have to take into account large part of our population is also, not affluent. They are also poor. They are dependent on support and so on and so forth. So, but definitely India is a huge market, and which is why we are seeing a rising global interest in India. But definitely, like I said earlier, the festive season has begun and we had a very good monsoon. Overall expectation is that rural India, the demand should pick up in rural India. There's a lot of hope that festive season should be good. Some of these sectors, FMCG, consumer durables, these sectors should put up a better performance going forward. You mentioned good monsoon. What makes the inflation go high this week? Inflation, if you saw the data, largely it's being driven by food, and within food also driven by vegetables. Yes. And we've seen over time, seasonalities in the food price inflation are they have become very prominent, and they are the one, and they're driving the inflation. So it was largely vegetable inflation, and because of the rains, supplies get impacted, crop gets impacted. So especially if you saw onion, inflation was quite high, and so on and so forth. So obviously that is sort of playing up, and also there was base effect. So the base effect is gone, so that is sort of showing up. So it's temporary. Hopefully temporary, because we are entering into festive season, which also means that there could be some pressure coming from oil. Oil always surges close to oil, as in I'm talking about the food products, edible oil and so on. So I guess probably it should remain okay in comfortable range, but nevertheless I think it's a wait and watch, I think, for the Reserve Bank also. जी, दीपशिका जी,
ये मेरा सवाल रहेगा सीनियर सिटीजन्स की तरफ से, क्योंकि हमारे कई सारे श्रोता जो हैं सीनियर सिटीजन्स हैं और उनका कॉल अधिकतर हमारे पास आता है। तो वो अब एक निवेशक बनना चाहते हैं इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट्स में भी। पहले तो क्या आपकी सलाह रहेगी कि उनको डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहिए कि नहीं, या फिर म्यूचुअल फंड का रूट अपनाना चाहिए, और क्या क्या तरीके हैं जिससे वो अपनी पूंजी को निवेश कर सकें, मे बी रिटायरमेंट फंड या जो भी उनको मिल रहा है? देखिए, जो बाजार में निवेश करने का होता है कि आप जितना आप सेफ, जो छोटे निवेशक हैं खास तौर पे उनके लिए, क्योंकि उनके पास अगर तकनीकी जानकारी नहीं है और अगर वो रेगुलर बेसिस पर बाजार को नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बाजार में निवेश करना एक बहुत अच्छा माध्यम नहीं है अर्निंग्स के लिए। और अगर उनका अर्निंग्स, उनका जो सेविंग्स है वो किसी सॉलिड उसमें लगाना चाहते हैं, मार्केट्स में अगर वो लगाना चाहते हैं, तो उनको ये देखना होगा कि वो किस तरह की कंपनीज में लगा रहे हैं, जो मजबूत कंपनीज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। पर वही जिनको थोड़ी जानकारी है उनको आना चाहिए। अदरवाइज जो है वो सेफ ऑप्शंस हैं, आपके बैंक डिपॉजिट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स तो हैं ही, उसके अलावा आपके पोस्टल सेविंग्स हैं और सीनियर सिटीजन सेविंग्स हैं। और आजकल तो बैंक में भी ब्याज दरें जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बेहतर हैं। तो सेफ ऑप्शंस में रहना, रिटायरल सेविंग्स, वो बेहतर रहता है। जी, It's the fact that 52% of Indians. I am more conservative in my approach towards, especially retiral savings. As I was saying, 52% of Indians invest in FDs, which means that their faith in FD, despite its fluctuating rates, now of course it's stabilized, they're happy with it. No, absolutely. Safe. They feel the money is safe. Yeah, everybody is comfortable. There is safety. You can withdraw as many. I mean, markets have also sort of become, but issue with markets is like I was saying. If you can track the markets regularly, if you have technical knowledge, and if you're ready, if you can bear the loss, why not? Please join the market, but then you should be ready to take that hit as well. It can go both ways. Yes. Yeah. Since we are at it, let me comment that there is a shift of the younger generation moving from the bank to investing in stock markets. We have an unprecedented number of demat accounts open now in the country. Does that give us this ordinary citizen a greater confidence in the markets? So this is like a very new thing, and like we were talking about this digital interface. So earlier the cumbersome opening up of demat account has gone away with, So now you have your mobile phones, you open a demat account, you trade on your mobile phones, you can track the market. So that, and this generation is much more sort of comfortable using their, very savvy using their equipment. So they're doing it. Right, that has facilitated. Yes, Parsh, let's talk about the rupee now. बिल्कुल, रुपए का हाल जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए 3 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान 103.16 के स्तर पर रहा। All right. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today emphasized the role of US-India Strategic Partnership Forum, USISPF as we call it in short, saying that it can play in providing impetus to industry and investment growth in India. Ms. Sitharaman today interacted with the members of the US-India Strategic Partnership Forum led by the chairman, John T. Chamber in New Delhi. During the meeting, Ms. Sitharaman spoke about India's rapid economic growth, pivotal role of youth, and growing investment prospects in insurance, housing, renewable energy. She also highlighted the commitment of the government to make India a favorable destination to do business. US-India Strategic Partnership Forum acknowledged the key initiatives taken by the government of India and the emergence of India as an investment destination. आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। आज एशियाई शेयर बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। हांगकांग के हैंगसेंग में 3.8% की गिरावट देखी गई। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 2.5% से अधिक गिरा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स लगभग बिना किसी बदलाव के साथ बंद हुआ। वहीं जापान का निकेई 0.7% बढ़ा
और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.3% की तेजी देखने को मिली। यूरोपीय शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.8% की कमजोरी देखी गई। लंदन का फुत्सी 0.5% से अधिक फिसला, वहीं जर्मनी का डैक्स 0.2% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहा था। Deepshika, before we move on to the US markets, we just talked about the US ISPF. How significant is this US-India Strategic Partnership Forum, and what has it brought to the country, brought for country, or at a global level? What is the advantage? Definitely, it brings businesses, industry, policymakers from both sides together where they can interact, and also we've seen over the years US-India relationship, especially in strategic matters, it has deepened over times. Also, there's this talk about friendshoring by the US and trusted supply chains, and we are also aligning on the semiconductor supplies, manufacturing. So I think this forum definitely has a role in sort of deepening the India-US relationship further. And it also means an exchange of knowledge and technology as far as defense and health is concerned, particularly. Absolutely. This provides a forum for, exchange of views and ideas, and basically helps in interactions and bringing any issues which are sort of holding up the relationship at the forums, which can be resolved. So it's a good platform to sort of take it, resolve issues, bring new ideas on the table. जी बिल्कुल। और अमरीकी बाजारों का क्या प्रदर्शन रहा वो लालिमा से जानते हैं। Gee, Sparsh, let's take a look at the US markets. Well, the US stocks ended higher yesterday with both the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average hitting fresh record closings fueled by a rally in technology stocks. The Nasdaq Composite advanced 0.8%, S&P 500 gained 0.7%, and Dow Jones Industrial Average added nearly 0.5% to settle above 43,000 level for the first time. A look at the oil prices now. Well, the oil prices fell sharply for a third straight session today as Organization of the Petroleum Exporting Countries lowered its outlook for global oil demand growth, and International Energy Agency forecasted a significant oil surplus in the global crude market. Brent crude was trading over 3.5% down at $74.60 per barrel. US West Texas Intermediate was also trading nearly 4% down at $70.90 per barrel when reports last came in. So global prices, global crude oil prices coming down at $74.60. Good news? Absolutely. I mean, oil prices coming down is definitely super news for India, which is a large importer. Yes. But it was largely expected in the sense after, Israel said it wouldn't be sort of bombing the supplies centers in Iran. I think there was a bit of expectation. सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.03% बढ़कर 76,210 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.26% गिरकर 90,690 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। दीपशिखा जी, संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहेंगे कि सोना पहले सेंसेक्स 1 लाख या सोना 1 लाख, क्या आप देख रहे हैं? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है स्पर्श जी। पर सोना हमने देखा है, अगर पिछला दशहरा लें और अभी का दशहरा लें, 14,000 का फर्क है दाम में, और सोना बढ़े ही जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी 2 चल रही हैं, तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन रहती है। तो श्रोताओं, वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। दीपशिखा जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। All right. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates importance of establishing global framework for digital technology, inaugurates ITU World Telecommunications Standardization Assembly and India Mobile Congress in New Delhi today.
Domestic benchmark indices end with losses. Sensex sheds over 150 points. Nifty settles above 25,000 and global crude oil prices fall sharply for the third straight session amid weak demand projections. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Sparsh Saxena signing off. Namaskar.